after ages I'm here back again. well आने का मेन लॉजिक मेन रीज़न ये था कि आई हैव बिन प्रोक्रेस्टिनेटिंग अ लॉट instead of just recognizing my actual potential. I have realized that this power of manifestation, this law of attraction is just very amazing thing that you cannot run out of it. If you believe it or not, it does exist. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं ऐसे दे सकता हूँ, बट टुडे इट वाज बिलीव्ड लाइक I cannot express. I'm not interested to tell you the story. I will tell you, sure. I'll tell you guys jaldi in future for sure. When I will again make a specific purposefully video on this topic. So, the reason is coming here that I can change everything. I can change the whole world. I hold a lot of potential in myself. I just procrastinate, but now this is not going to happen. अब ऐसा नहीं होगा. I will not be procrastinating. कोई भी चीज़ बाद के लिए नहीं रखूँगा. Instead, I'm not even focusing on myself, like on better eating. I'm not focusing on my body, actually, my physical attire. I used to pay a lot of attention on my physique, as I was so health conscious. I was doing regular exercises, I was eating healthy meal, and actually I was eating along with healthy meal, I was eating frequently on a time, like I had proper schedule. That body was used to it, and it knew that it was going in a fluent way, schedule. But nowadays it is just totally messed up. I am eating at any time. Body, because it like आप 2 बार भी कुछ खाओ, that is important. That is not important actually. Yeah, आप 3 बार खाओ, 6 बार खाओ, that is not important. But मोटे होने के लिए या फिर फिट होने के लिए the important thing is that the time. बॉडी को आदत होनी चाहिए. You are giving it meal on a time, on that time. Like 2 बार ही खाओ. ज़रूरी नहीं है कि 10 बार भोजन करें तो ही हम मोटे हो सकते हैं, क्योंकि इंसान उसके लिए नहीं बने 10 बार भोजन करने के लिए. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डू लाइक हैव सम डाइट प्लान्स, हु ईट अ लॉट, बट दैट इज़ नॉट वी आर मेड फॉर. 2 बार ही खाओ, इम्पॉर्टेंट. बट टाइम, सत्यम को ये रियलाइज़ करना है बस. This video is not making for anyone else. This video is just for me. Obviously, I'm not gonna watch it again. But yeah, I will be doing that now. I'll not be procrastinating, because I know there is a lot of things about to come in my life. There are a lot of things great. There are a lot of great things about to happen in my life. So I would need to be, I will be, look how bekar my grammar is getting dhire dhire. So it is required that I be capable of handling those things, because it's not about good luck, it's about the fortunate, the goddess of good luck. The fortune only comes to the person who is in action, who is just sitting and wish for it. Is never favored by the goddess of luck. The main problem is that I do procrastinate. I have a lot of knowledge, I have a lot of potential, I have a lot of capabilities, but what I do, I just do not execute them. I have a lot of things pending. Actually, I should be doing that, but instead of doing that, I have a lot of millions of things जो मैं करता रहता हूँ. जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं करता. कोई बात नहीं, करता था. दैट इज़ द पास्ट, दैट वॉज द पास्ट, बट नाउ द फ्यूचर विल चेंज. नाउ द प्रेजेंट आई विल चेंज, एंड so is the future will change. So I will not be procrastinating now. At least रोज़ मैं 10 मिनट तो निकाल ही सकता हूँ 24 घंटे में. डजेंट मैटर हाउ मच बिजी आई एम.
10 मिनट के लिए आई विल बी रिकॉर्डिंग एनीथिंग. I will be just telling you about the day. That does not matter. It is obviously I have already mentioned that this thing I should not be doing. Yeah, I have already mentioned that this video making, the purpose of this video is not to serve people. Obviously I want to serve this earth, the people. This is not for people. I do not want people to watch these videos. Some videos, obviously not this one. This is for me, so I at least be consistent. I do post videos regularly. That is the important thing. Once I got my hands on it, then I will start posting, then I will start uploading the kind of content for people, making some efforts, doing something. एक्सपोजर इस पे लॉक कर देते हैं, बिकॉज हाँ इट डज लुक, पीछे बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्राइट रखना इज़ नॉट गुड समटाइम्स. या दैट इज़ गुड. ओके, ए लॉक. देन दिस इज़ ऑल. आई हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. मैं पोस्ट करूँगा आपसे रेगुलर वीडियो. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग इज़ अबाउट टू हैपन, ऑलरेडी हैपन एक दिन पहले, बट समथिंग ग्रेटर देन दैट, समथिंग ग्रेट इज़ अबाउट टू हैपन इन माई लाइफ. बहुत जल्दी आई एम गोना बी वेरी वेरी सक्सेसफुल पीपल. सो दिस वीडियोज़ जब होंगी, जब मैं वापस से देखूँगा, देन आई विल बी टेलिंग people who are my followers or would be loving me कि this is the power of manifestation, this is the power of law of attraction. I truly believe in it because it does exist. So this is for today. This is very great power and I believe in that I believe in that, and I know I'm going to be very very successful very soon. आई डोंट नो आई एम नॉट वर्किंग. इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं होता जो विदाउट रीज़न होता है. एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन रीज़न, ओन पर्पस. कुछ तो होगा ही, प्रभु ने कुछ तो सोच रखा होगा मेरे लिए. बट आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल वेरी वेरी सून. That is the sure thing, very very soon. And something great is about to happen in my life out of nowhere. Something extraordinary, something which I have I've been wanting till now, and that will happen. So this is it. I will be successful very soon and I will get everything what I want. I will make this place, I will make this earth a better place because I am living in it. I do exist in it. So see you in the next video. 8 मिनट की वीडियो हो गई. That is very easy. It's just about taking the first step. I do procrastinate, but the main problem is the main thing is कि करना क्या है मुझे completely. I do not have to think that कि मेरे को 10 मिनट या 20 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है. मैं जब भी ऐसे रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तब I do not think the length of the video because I do not have any script or anything. But I क्या बोल रहा था, बट आई जस्ट हैव टू सिट. मुझे सिर्फ एक स्टेप लेना है. पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी वीडियो बनानी है. नहीं, अब से माइंडसेट ऐसा रखना पड़ेगा कि जस्ट आई हैव टू रिकॉर्ड फॉर 10 सेकेंड्स, राइट? जस्ट 10 सेकेंड्स. और 10 सेकेंड्स की वीडियो नहीं, इट्स जस्ट अबाउट सिटिंग एंड टेकिंग द फर्स्ट स्टेप. मैं आके यहाँ पे बैठ गया. इवन आई वॉज रेजिस्टिंग राइट नाउ दैट कल बनाता हूँ. इट इज़ नॉट द आइडियल टाइम. इट इज़ नेवर too late. It is always the right time to do the right thing. It's never the wrong time to do the right thing. It's never too late to do the right thing. I was thinking that it's too late to record video right now. And कितनी अच्छी आ रही है लुक, फेस पे डायरेक्टली लाइट पड़ रही है. इट इज़
अति उत्तम। देन हाँ, आई टुक द फर्स्ट स्टेप, नाउ 10 मिनट की वीडियो बन गई। सो इट इज़ जस्ट अबाउट द टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। इफ़ यू आर थिंकिंग, इफ़ यू आर जस्ट it is for me, this message is for me, Satyam, if you are just thinking of doing something and you are resisting कि मैं थोड़ी देर बात करता हूँ because it's too late, और okay ठीक है, it would be too late, हो सकता है बहुत ज़्यादा लेट हो गया हो, सही समय नहीं हो, but what you have to do is just to do for 1 second, 1 step, just ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा नहीं करना है, थोड़ा सा कर देते हैं। सपोज़ कि मुझे झाड़ू लगाना है, अभी द होल रूम इज़ गंदा बहुत ज़्यादा, और मेरा मन नहीं है कि आज नहीं कल लगाऊंगा, बट मैं इतना, मुझे सिर्फ अपने आप को कन्विंस करना है कि ठीक है कल ही लगाना। अभी क्या करना है, सिर्फ झाड़ू लेके एक टाइल्स का क्यूब, स्क्वायर शेप की टाइल्स होती है, सिर्फ उसको साफ कर दो। दैट डज नॉट टेक लाइक इट्स सिमिलर टू टेकिंग नो एफर्ट्स, डूइंग नो एफर्ट्स। सो जस्ट एक टाइल्स के लिए आप झाड़ू निकालोगे, and you will see that you have cleaned the whole room, hall, bedroom, kitchen, balcony, everything, and you will see anywhere you will see dust, you will clean it. What you just did, you just took the first step of picking up that jhadu and just cleaning one tiles. You have a potential to do a lot, Satyam. तुम्हारे पास बहुत knowledge है, and you can achieve anything you want. You have this whole world. तुम्हारे पास बहुत अच्छे इंसान का सपोर्ट है। So see you in the next video from tomorrow. I think बस ट्रेन में भी मैं वीडियो बना लूँगा, हाँ चलेगा। I will try if I can do anything in train, that would be great. Okay, so I'll see you in the next video from tomorrow. Bye bye.